Hello and a very warm welcome. So इस वीडियो के साथ we are starting a new series because a lot of students had been demanding this और मुझे भी ऐसा लगा कि yes the botany strategy needs to be updated. So here I am with a new series on botany strategy and being very specific I am targeting this botany strategy to a score above 300 in the main examination, and when it comes to the IFS examination, then again a score above 60% or 65% in the IFS examination. Both these scores are such good scores that they will keep you optimally in the game, and you can be very sure of the interview call even if you have done average or slightly above average in general studies. So this is our botany strategy. It is a series of 6 videos, and obviously ये series जो है it is targeted to the students who are going to take the civil service or IFS examination of 2025 or 2026. Obviously ये series उन students के लिए नहीं है जो इस साल 2024 में सिविल सर्विस या IFS मेन एग्जामिनेशन देने वाले हैं. ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए व्हाट आई हैव टू से एट दिस पॉइंट दैट आपने जो भी बॉटनी की प्रिपरेशन की है मैक्सिमम until the end of February आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, but of course along with your general studies, never at the cost of general studies, and right from 1st March 2024 until the prelim examination आप पूरी तरह से 110% अपने आप को प्रीलिम जीएस प्रीलिम सीसेट में इमर्स कर दो. You will not regret it because this is going to keep you in the race. Once you clear the prelim examination, then only you are going to need the optional subject. और जून जुलाई और अगस्त में आपके पास इतना टाइम होगा कि अगर आपने अच्छे से अपने बॉटनी ऑप्शनल के प्रिपरेशन अभी तक की है तो उन 3 महीनों में इन दोज 3 months you will be very much in command with your botany optional. At that point of time मैं बताऊंगा कि बॉटनी को फिर सेलेक्टिवली कैसे रिवाइज करना है. लेकिन ये जो हमारा सीरीज है 6 वीडियोस का सीरीज, दिस इज गोइंग टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स जो अभी 2025 या फॉर दैट मैटर 2026 के प्रिपरेशन में अपने इनिशियल स्टेप्स ले रहे हैं. इस वीडियो में इस सीरीज में देर आर 6 वीडियोस एंड ईच वीडियो हैज अ स्पेसिफिक थीम. और इसलिए मुझे ये सीरीज करने की जरूरत महसूस हुई बिकॉज अगर इन सारे थीम को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करें तो शायद उतना जस्टिस नहीं हो पाएगा. Therefore 6 videos. The first video, that is today's video, is where we are going to discuss the core of botany strategy. The very basic nut bolt of botany strategy is what we are going to discuss in this present video. Second is, the next video in this series will be discussion and decoding of the botany optional syllabus, considering both UPSC main syllabus as well as the Indian Forest Service syllabus of botany. उसके बाद the choice of books and other supporting material, other resources for your botany preparation, especially if you are planning to do botany by self-study. Then next video will be how to study, how to make notes, and how to revise your subject, including a good focus on time management. Because सिर्फ आपने botany नहीं करनी, you have to balance it with your general studies preparation. Then we will come to how to write answers, and finally how to get examination ready so that you bring everything together जो आपने इतने वक्त में किया है, making notes, studying, building concept, practicing diagram, and then you get ready to present it in the examination for the best reward coming out of the examiner. Okay, so in these 6 videos we are going to cover all of these things, and these 6 videos we are going to do in 3 weeks. Okay, so each week there will be 2 videos. One video will be on Monday and one video will be on Thursday. So every Monday you will have one video and every Thursday you will have one video, and that way we will be completing this journey in a matter of exactly 3 weeks, and after that you are more than ready to start your botany preparation. Okay, so let us now get ahead with the session that we have today. You are now introduced with the series,
And now let us see what we are going to do in today's session. There are 7 things जो हम आज के सेशन में करने जा रहे हैं. The first thing that we are going to do, botany क्यों? Why should you consider botany as an optional, especially if you have some kind of background which gives you the familiarity with the botany syllabus. Second, what should be your target score जो practical भी हो and at the same time जो ambitious भी हो in the sense that almost guarantees you a good place in your examination's final result. Next, what are those 5 things that you have to prepare for? अगर आपने बॉटनी में अच्छा करना है तो ठीक है, बॉटनी की तैयारी हो रही है, लेकिन बॉटनी की तैयारी में वो कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं विच यू हैव टू रियली प्रिपेयर फॉर, और वो अगर डे 1 से क्लियर होगा तो हमारे एफर्ट भी उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे. इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 5 चीजें क्या हैं, वी आर टोटली अवेयर ऑफ दैट. देन योर चॉइस ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी करनी है या गाइडेंस के साथ करनी है. दोनों के अपने बेनिफिट हैं, दोनों के अपने लिमिटेशंस भी हैं, राइट? तो वो भी देखेंगे थोड़ा. फिर प्रिपरेशन में कितना टाइम स्पेंड होगा, बॉटनी के प्रिपरेशन के 5 की ट्रूथ्स क्या हैं जिनको इग्नोर करके किसी की तैयारी बॉटनी की अच्छी नहीं हो सकती, और वो कौन से 8 प्रिपरेशन डिस्ट्रॉयर्स हैं. वो मिथ हैं, लेकिन किसी भी मिथ की तरह बहुत लोगों को उन पर बहुत ज्यादा यकीन होता है, बट अल्टीमेटली दे एंड अप बिकमिंग प्रिपरेशन डिस्ट्रॉयर. अगर एक ही मिथ के आप शिकार हैं तो ये प्रिपरेशन को कम डैमेज करेगा, अगर एक से ज्यादा है तो वो प्रिपरेशन को ज्यादा डैमेज करेगा. अगर इनमें से 5 मिथ के आप शिकार हैं, if you are a victim of 5 myths or more, it has the potential to destroy your preparation. So you have to avoid falling into those traps at all the costs. So these are the things that we are going to do in this session. Let us now start and let us go to why botany. There are 6 solid reasons why you can and you should take botany. You will find huge amount of opinion floating on the internet, which is good enough to confuse you. Some of them will say that because of this subject, I got such and such rank and very good for me. And at the same time, lot of people who have never studied the subject will come and tell you this is not a good subject without ever touching the subject. It is possible that they are not even from science background, but because they have an opinion, they will articulate that opinion. And internet, YouTube is a big amplifier, a big megaphone that amplifies every voice irrespective it is true or it is not true. So you need to know कि अगर आप ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो कौन सी 6 चीजें हैं जिसके लिए आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं. The first thing is that if you have a proper botany or any kind of life science or allied background, like if you have studied agriculture, if you have studied geology, if you have studied biotechnology, biochemistry, microbiology, environmental sciences, something to do with bio, this can be a very good subject for you. Good and rewarding. Why good and rewarding? Because it has a very clearly laid out syllabus, and the syllabus is always respected. In botany, they do not ask out of the syllabus question. In botany, they do not ask current based question. कुछ भी current based नहीं पूछते हैं. You can pick up the topic and you can see whatever questions have been asked on a given topic, nothing relates to current. So even though ecology या biotechnology जैसे कुछ पार्ट हैं जहां पे current based question पूछे जा सकते हैं, the optional subject question setters, they hardly ask any current based question. So you have to keep that part in mind. There is a very clear relation between performance and a score. In whole lot of humanity subjects, this relation would not be there. आप कई लोगों से ये सुनते हुए अपने आप को पाएंगे कि मैंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन पिछले अटेम्प्ट से मुझे कम मार्क्स आए. कम प्रिपरेशन के साथ पिछले अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स आए, ज्यादा प्रिपरेशन के साथ इस अटेम्प्ट में कम मार्क्स आए. अक्सर आप बहुत सारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में लोगों को सुनते हुए बोलते हुए देखेंगे. लेकिन in a subject like botany, that does not happen. If you are well prepared, you will be well rewarded. If you are not well prepared, you will be punished. Simple as this. A good preparation is very, very practical. It can be done
within a time frame, and it can give you very high reward provided you have been systematic from day one. Not hard work, but planned work and consistent work. So you cannot solve botany equation by putting 14 hours a day for 5 days and the equation is solved. ऐसा नहीं है. लेकिन अगर आप 2 to 3 hours भी देने के लिए रेडी हैं, बाकी टाइम आप पूरी जनरल स्टडीज पे दो. लेकिन अगर आप 2 to 3 hours भी देने के लिए रेडी हैं, तो दिस इज अ सब्जेक्ट दैट विल गिव यू ह्यूज रिवॉर्ड्स एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन. सो बॉटनी इज समथिंग जो आप थोड़ा थोड़ा करो, डेली करो और लॉन्ग टर्म के फ्रेम में करो, जीएस के साथ करो, सो दैट you do not have any pressure for general studies and you are performing well in general studies as well. Then resources काफ़ी अच्छे available हैं, guidance भी काफ़ी अच्छे available हैं. If I talk about myself, then I can tell you that almost 80% of the selections in the last 20 years, they have been in one or the other way related to my classes. And even if you decide to do entirely on your own, तो resources भी काफ़ी अच्छे available हैं इस subject में. और अगर IFS के लिए जा रहे हो तो it is a very solid optional subject. It goes very well with agriculture, it goes very well with forestry. And in general studies, it will help you in environmental ecology, and the biotech part is going to help you in science and technology. Okay, so that is the strength of the subject. What is your target score? क्या होना चाहिए हमारा target score? Without any iota of doubt, your target score should be 300 plus. Right? This is an essential score to stay in the game. To stay in the game means that you are definitely going to get an interview call. That is staying in the game. And also staying in the game will mean that even if one or two general studies paper have not gone the way you were wanting it to go, still you have a solid chance of finding a place in the final list. So that is what we mean by staying in the game. And this is, like I say here, very much well achievable, very much achievable, provided you have these three things: proper concepts, information to go with that concept, and proper presentation skills, how you are writing your answers. So presentation skill is something someone needs to tell you, and then you need to practice on those lines, you will get better. Concept is something you can either build yourself or you can build with help of a teacher. Information is again you can either gather yourself or you can have it gathered already ready-made by a teacher. But these three things, if you bring them together, botany is something that can give you 300 plus a score so easily, so easily. And finally, like I say here, you can develop it either on your own or with somebody's help. Now, what are the 5 things that you have to prepare for in this optional subject? Without that, you won't go very far in botany subject. Okay. First thing is, syllabus के एक टॉपिक को समझना जरूरी है. If you do not understand the topic, UPSC will find out that you have not understood the topic. So if your preparation has been only information based, only fact based, UPSC आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ट्रैप कर लेगी कि आपका स्कोर एक लिमिट के बियॉन्ड जाएगा नहीं. इसलिए समझ डेवलप करनी is the first and foremost thing in this subject. For that matter, that applies to every other subject, whether you admit it or not. Okay. Second thing is, with every concept, there have to be certain key facts. Without that, the concept will not get the strength of an answer. So, to convert the concept into answer, certain key facts has to be there to go with the understanding. And when you are preparing, it is very important that you revise the botany subject at least 4 times to have a very precise, very accurate level of answer writing. And you can revise 4 times only if you have spent time and effort in making your handwritten quick revision notes. So from day 1, when you do the very first chapter, get into the habit of
writing your own notes while you are attending the class, keep writing, keep writing, keep writing. That will be 10,000 times more precious than any study material in the world. I can bet anything on that. Okay. This is a science subject, bioscience subject. So illustrations will be playing a big role. That will mean diagrams, that will mean flowchart, or for that matter, for a phenomenon, illustration is nothing but example. But in one form or the other, you have to illustrate. For a structure, illustration is the diagram. For process, the illustration is the flowchart. And for a phenomenon, illustration is the example. So you have to illustrate all the time. And then you have to practice for speedy recall and speedy writing. Only speedy writing is not enough. Most often we write slow because we are recalling slow. So you have to learn to recall fast. And how do you fast recall it? By revising in a very, very strategic manner. And this is something I will discuss later in this series, how to revise. How many normal revisions have to be undertaken and how many active recall based revisions have to be undertaken. We will talk about it. But if you have revised it, your own handwritten notes 4 times, you will be able to recall it in a very, very speedy manner. And if you are able to recall it in a very speedy manner, you will be able to write fast. Finally, keep in mind these 5 things कि अगर आप botany prepare कर रहे हो तो these are the 5 things that you have to prepare and how much time you have to spend on this subject. So to cover it exceptionally well, what you need is just 4 hours a day. You are free to spend all the remaining hours on your general studies. Just 4 hours a day for a period of maximum 6 months. Not even 5 months. Let's keep 5 months aside. 6 months, 4 hours, provided you know क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है? क्या करना है और कैसे करना है अगर आपको पता है, तो these 4 hours are going to be more than adequate for a period of 6 months. उसके बाद just apply some time, some energy for revision and botany will be taken care of. And how you can do it? How to do it? You can do it on your own, provided you know exactly कि आपने क्या करना है किसी टॉपिक में, कैसे करना है और किन रिसोर्सेज से करना है. तो आप खुद से भी कर सकते हो. इफ यू फील यू लैक these insights, then you can take my help also. But this is not an occasion, this is not a video to talk about what help I will be giving you. Maybe in the last of the series, I will tell you about my programs. But right now, both these options are there. I'm not going to tell you that आप अपने आप से खुद से नहीं कर सकते हो. But remember, you need to know क्या करना है, कैसे करना है, किसी टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक को प्रिपेयर करना है और किस डेप्थ पे करना है. If you have that insight, you can always do it entirely by yourself. Now, we come to the 5 key truths and 8 preparation destroyers in the last part of this strategy discussion. So 5 key truths. First and foremost, understanding the topic is more important than mere information. जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, वहां पे अंडरस्टैंडिंग को तो आपसे एक्सट्रैक्ट कर ही लेते हैं. अगर आपने अंडरस्टैंडिंग के बगैर सीधा सीधा नोट से, मटेरियल से, कहीं से भी फैक्ट्स एसिमुलेट किया है ना, उन फैक्ट्स को उन फैक्ट्स के साथ आप प्ले नहीं कर सकते. एंड इफ यू कांट प्ले विद योर फैक्ट्स, you can't write good answers, because even a slight change in the wording of the question will change the scope of the answer greatly. And for that, it is crucial, absolutely crucial, that you know your facts on the platform of understanding. So without understanding, no. And that is something, understanding will make this subject easy and will make this subject interesting also. Second, self-made notes and self-made answers will keep you in top 5%. जिनका सिलेक्शन होता है ना बॉटनी के साथ, जिनके हाई स्कोर्स आते हैं ना,
उनमें अगर एक कॉमन लिंक है तो उनके 90% टॉपिक्स, समटाइम्स 100% ऑल्सो, उनके अपने सेल्फ मेड नोट्स होते हैं। वो कभी भी सिर्फ स्टडी मटेरियल पे नहीं छोड़ देते, कभी भी बुक्स पे नहीं छोड़ देते, हाईलाइट कर दिया, ये कर दिया, बुक्स को, स्टडी मटेरियल को। डजंट पे, डज नॉट पे। सेल्फ मेड नोट्स is the oxygen of your botany preparation. Next is, you can reduce the entire syllabus to 600 query themes. 600 themes हैं जिनको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पहले मेरे असेसमेंट में 500 थे, लेकिन इन द लास्ट 5-6 years आई हैव एडेड 100 मोर थीम्स कि चलो इन फुल सेफ्टी मोड वी आर गोइंग टू कवर 600 थीम्स एंड दीज आर द 600 क्वेश्चन वर्दी थीम्स इन द एंटायर सिलेबस। अब इनको जैसे कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए जाए, क्वेश्चन में भी 1000 बन जाएंगे इनको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके, लेकिन थीम्स तो वही 600 हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दीज 600 themes. Illustrated answers will give you 1.5 times more marks. Means for every structure, draw a diagram. For every process, make a flow chart. For every phenomenon, give at least one example. 1.5x more marks will be coming your way. Where you are getting 6, you will get 9. Such is the power of illustration. And if you really want to be in the top form in the main examination, कि 300 marks आपसे कोई नहीं ले जा सके, so 4 cycles of revision and you will be able to do with your self-made notes plus 1 test series, and that's all you need, provided you ignore, you at all cost stay away from 8 preparation destroyers. First notion, a lot of memorization is needed. जो भी कहता है उसने इस सब्जेक्ट को समझा नहीं है। अगर कोई टीचर कहता है तो उसको ये सब्जेक्ट समझाना नहीं आता, इसलिए वो आपको एम्फेसाइज कर रहा है कि इसको मेमोराइज करना होगा। नो, इट इज साइंस, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन बी मेड इजी, और आप पहले समझोगे फिर फैक्ट्स पे आओगे। सेकंड, बहुत लोग सोचते हैं खुद से प्रिपेयर करते वक्त कि पीवाईक्यू कर लेंगे हो जाएगा। 50% क्वेश्चन आएंगे पीवाईक्यू से। 15 ईयर्स की पीवाईक्यू लगा लो, 50% क्वेश्चन आएंगे, बाकी क्वेश्चन नए तरीके से फ्रेम होंगे। इसलिए बगैर वो 600 थीम्स को किए आप एग्जाम में एक्सेल नहीं करोगे, और हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का नेचर ऐसा ही है। पीवाईक्यू कैन गिव यू इनसाइट कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, बट इट डज नॉट अकाउंट फॉर, इन एनी गिवन ईयर, it does not account for more than 50% questions. Okay, some questions will always be newly framed, differently asked, and so on and so forth. Internet is a good source. Don't fall into this trap कि यहाँ उस वेबसाइट से निकाल ली, उस वेबसाइट से निकाल ली। You will pay with your attempt. You will pay with your attempt, और एक दो अटेम्प्ट को वेस्ट करके अगर ये ज्ञान मिला तो you would have lost 2 years of your youth. Don't do that. NCERT and PMT books are going to be enough. Not at all. वो स्कूल के लेवल की किताबें हैं, वो आपको फाउंडेशन देती हैं, वो प्रिपरेशन नहीं देती। वहां से शुरू कर सकते हो। और मैं रीडिंग में जो हमारे रीडिंग रिसोर्सेज हैं, जो हमारा तीसरे वीडियो में हम कवर करेंगे, वहां पे मैं एनसीईआरटी और पीएमटी लेवल की बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। बट इट डजंट मीन कि वो काफी होगा, वो तो शुरुआत होगी। ओनली स्टडी मटेरियल कैन बी मेमोराइज एंड दैट विल बी इनफ। नहीं कर पाओगे मेमोराइज। You have our study material being sold by thousands of photocopy shops. पुराने वाले 2018 के, 2016 के कवर बदल बदल के बेचते रहते हैं। बट द पॉइंट इज, Amazon पे भी बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी बेच रहे हैं, एंड जस्ट टू बी क्लियर, Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे एवोल्यूशन डज नॉट सेल। सो दैट्स वेरी क्लियर। सो अगर वो नोट्स आप वहां से ले रहे हो तो टेक इट एट योर ओन रिस्क। इट विल बी इनकम्प्लीट, इट विल बी हैphazard, it will definitely be old, out of sync with what the examination presently needs. लेकिन कई लोग सोचते हैं कि मटेरियल मिल जाए तो उसको रट्टा लगा लेंगे। अगर मिल भी जाए नहीं कर पाओगे until you have made self-made notes. That's the harsh truth. Okay? और अगर आपको सेल्फ मेड नोट्स का इंपॉर्टेंस देखना है तो इस साल की जो जूलॉजी की टॉपर हैं स्मृति, जो हमारी स्टूडेंट हैं जूलॉजी की, आप स्मृति के इंटरव्यू में जाकर के सुनो व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर प्रिपरेशन। वो क्लासरूम कोर्स कर रही थी, लेकिन एक एक टॉपिक पर उनके सेल्फ मेड नोट्स बने हुए थे। देन ओनली टेस्ट सीरीज इज गुड इनफ? नो, दैट इज द फाइनल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन,
दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ। अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इलस्ट्रेशन बनाना नहीं आता, तो टेस्ट सीरीज क्या ही हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज इज समथिंग टू टेस्ट योर सेल्फ कि अब फाइनल लेवल पे क्या फाइन ट्यूनिंग करनी है। इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सॉलिड प्रिपरेशन। मस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम डे वन। आंसर राइटिंग नहीं, नोट्स मेकिंग डे वन से आप कर सकते हो। आंसर राइटिंग कम से कम 1 महीने के प्रिपरेशन के बाद करो, तब आपके आंसर देखने लायक होंगे। सीजनल स्टडी विल हेल्प। 2 महीने पढ़ के क्लोज कर दिया, फिर मेंस आएगा तब हम करेंगे, दैट डज नॉट पे, अनफॉर्चुनेटली। So stay away from these myths. They are known to have destroyed so many dreams. Don't let it act upon your dreams. So this is something that I had to share with you in this introductory video. Now, in the next video, we are going to decode the syllabus for both civil service as well as for forest service. And we will develop an integrated syllabus which you will be acting upon. So that's all, my friends, in this video, and I will see you in the next video. And in 3 weeks' time, we will be concluding this series. I hope you found this video helpful, and I'm very confident that you will find this entire series very, very meaningful, giving direction to your botany preparation. Till we meet again, goodbye and good luck to all of you.